Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari laid the foundation stone for 9 national highway projects. Markets of Agartala decked up with idols of Goddess Lakshmi. Immersion of Goddess Durga continues at Dashami Ghat. Huge gathering could be seen centering the Visarjan. Congress launches Pick Up Bihar social media campaign ahead of the forthcoming Bihar elections. AICC spokesperson Randeep Singh Surjewala took a toll on the Manohar Lal Khattar-led government in Haryana on the issue of Nikita Tomar murder case. Pollution Control Board of Tripura collected water samples from major rivers of the state to check the amount of pollution, centering immersion of idols. Moving to the news in details. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari laid the foundation stone for 9 national highway projects. The program was hosted at the Civil Secretariat through video conferencing on Tuesday. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari today laid the foundation stone for 9 national highways for the state of Tripura. Donor Minister Jitendra Singh, MOS, MORTHS, VK Singh and Chief Minister Biplab Kumar Deb remained present at the program hosted by video conference. The 9 national highways includes Kailash Shahar to Kumarghat, Agartala Khwai, Julaibari Bilonia, Agartala Churaibari and Manu Shinglungbari. The estimated cost of 9 NH projects with a total length of 262 kilometers will be rupees 2,752 crores. आज मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय विप्लव देव जी के सतत आग्रह से जो त्रिपुरा के विकास के लिए बहुत कटिबद्ध है, आज 2,752 करोड़ रुपए की लागत से करीब 262 किलोमीटर की नौ परियोजना के काम उसका शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि ये पूरा काम 1.5 साल में करने का लक्ष्य हमने सामने रखा है और 1.5 साल में ये काम पूरा करने से त्रिपुरा की तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। जुलाईबारी से बेलोनिया तक जो रास्ता है उसका काम अवध हो गया है। ये त्रिपुरा के पूर्वी क्षेत्र से बांग्लादेश का संपर्क इसका सुधरेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। खैरापुर से अमतकली 147 करोड़ का कार्य है, जिसमें पहले से बने बाईपास को 2 लेन पे शोल्डर बनाया जा रहा है। In his speech, Nitin Gadkari said the connectivity of the state, which is going to emerge as a gateway to Southeast Asian nations, will see a change once the projects are implemented. He added the Feni Bridge will connect the entire northeast with Chittagong port of Bangladesh and Haldia in West Bengal. This will bring down the transportation cost to any material. Also, the center will render all possible help to Tripura. 8,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 2015 से 2020 तक 365 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण मुआवजे के रूप में त्रिपुरा में दिए गए हैं। 2020 में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फेनी ब्रिज का बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सबरूम भारत और रामगढ़ बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर आरसीसी पुल दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब दिसंबर कोई दूर नहीं है और फेनी ब्रिज का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है।
130 करोड़ रुपए लागत से करीब 2 किलोमीटर का ये ब्रिज सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण में काफी महत्व देता है। सबरूम से चितगांव पोर्ट की दूरी 75 किलोमीटर है और इस ब्रिज से बनने से चितगांव पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट के से सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी, जिससे त्रिपुरा का आर्थिक विकास करने में ये ब्रिज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बहुत उपयोगी होगा। Chief Minister Biplab Kumar Deb congratulated the Union Ministers for awarding 9 national highway projects for the first time in the history of Tripura. He said, once the road projects gets implemented, the pace of development in the state will gain pace. The alternative national highway Churaibari-Agartala via Koilashahar and Kamarpur will reduce the distance by 40 kilometers and it will be a great achievement. जो त्रिपुरा के एक समय एक ही नेशनल हाईवे जो आज के दिन में नेशनल हाईवे 8 जो कि 198 किलोमीटर चुराईबारी टू अगरतला 190 प्राय 200 किलोमीटर है और उसमें 3 पहाड़ी एरिया है, बरोमुरा, अथरमुरा और लंगतराई। और जब भी बारिश होती है, यहाँ औसत से ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, रोड बंद हो जाती है। और माननीय नितिन गडकरी जी को इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था और आपके प्रयासों से चुराईबारी टू आसाम का बॉर्डर का जो रोड है, आपके प्रयासों से कम 12 साल बाद वो रोड बनी थी। सभी समय त्रिपुरा के लिए प्रॉब्लम होती थी, आपने इसको निराकरण किया था। और अभी जो ऑल्टरनेटिव जो रास्ता तैयार हो रहा है, जो कि चुराईबारी से अगरतला तक कैलाशहर होके, तो वो रोड बनने से जो कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो जाके 160 किलोमीटर में पहुंचेगी, माने 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। और वो पहाड़ी एरिया से नहीं है, तो कोई भी बड़े पहाड़ी नहीं है इसमें, जिस कारण से लैंडस्लाइडिंग होने का संभावना नहीं है। Chief Minister Biplab Kumar Deb also requested the Union Minister to expedite 4-lane work from Churaibari to Agartala. Besides, he sought Gadkari's help to get rupees 38 crore for repairing of the roads. Bureau Report, Hallabol. Markets of Agartala decked up with idols of Goddess Lakshmi. Rates of idols are comparatively higher than previous years. Ahead of the upcoming Lakshmi Puja on 30th of October, the markets of Agartala have been decked up with Lakshmi idols, the goddess of wealth and prosperity. People of all sections every year worship Goddess Lakshmi according to their strength. It is a Hindu religious festival and most popular in Tripura. With full devotion and enthusiasm, women in every Hindu family organizes Lakshmi Puja. Children take part in bursting crackers and organizing picnic. Also, a lot of delicious food items are prepared during Lakshmi Puja celebrations. Talking to the reporters, the seller said, this year they are undergoing losses due to COVID-19. Rate of materials needed for making idols are also high. Moreover, they are unsure whether people of all sections will perform the puja or not because of COVID-19 pandemic. Following which, they have prepared Lakshmi idols in limited numbers as the sales are expected to be low. করোনার কারণে মূর্তি কম বানানো হয়েছে, তার জন্য ওই কয়েকটা মূর্তি নিয়ে এসেছি। এখন পুজো হবে কিনা তাও বলতে পারলাম না। অন্যান্য বছর তো বসতাম টিআরডিসের মধ্যে, এখন বর্তমানে ওয়ার্ক ফ্রম নিচে বলেছে। কীরকম চাহিদা মনে করেন? চাহিদা এখন বলতে পারলাম না কতটুকু হবে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। কীরকম রেটে এবার আছে? রেট আছে মোটামুটি একটু। কত থেকে শুরু হয়েছে? কত শুরু হয়েছে? এটা তো 350 টাকা আসছিল। এই যে বর্তমান সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে আপনাদের যে অনেক মেটেরিয়ালস লাগে, তার মধ্যে আপনার কইতে হচ্ছে মূর্তি বানাতে হয়। রঙের দামটা একটু বেশি, সব কিছুর দামই বেশি চলছে। স্যার এবার একটু খারাপ বই, কিন্তু বাজার মোটামুটি ভালো আমরা স্টার্ট করছি না। তো বাজার আমরা করে স্টার্ট করবো, স্টার্ট করার পরে বাজার দেখলে করার পরে আমরা কইতে পারবো আর কি। না আমাদের বাজার হলো বেলাবর এডিনা করে এরিয়াতে বেলাবর
ওইখানে আমরা সমস্ত শিক্ষক যারা করে আমরা সবসময় টিআরটিসির মধ্যে আগের বার ইয়ে করতে পারি। এবার নাকি আমাদের এখানে জায়গা দেওয়া হলো থেকে জায়গা দেওয়া হয়েছে, মানে সমস্ত লোকগুলো কিছু কিছু লোক সবাই জায়গা মিটিং করে নিতে আছে, সবাই ভাই যাবো আর এখানে সবাই ব্যবসা করবো আর। The rates of idols are also expected to be comparatively high than other years. Bureau Report, Hallabol. Hallabol.com host Dr. Bablu Shukladash expired on 25th of October in the morning hours at Agartala ILS Hospital. Dr. Bablu Shukladash, specialist in anesthesia DA and biochemistry MD, expired on 25th of October 2020 morning in Agartala ILS Hospital. 54 years aged Dr. Bablu Shukladash was suffering from breathing ailment and pneumonia, but tested negative for COVID-19, said the doctors. Morning hours of 25th October, on the auspicious occasion of Mahanavami, Dr. Bablu Shukladash breathed his last after he went through a heart attack. The whole doctor fraternity and members of Hallabol are mourning over his sudden demise. Dr. Bablu Shukladash was a kind-hearted man, always keen towards helping people, and was a well-wisher of Hallabol. He also used to host the Health.com talk show of Hallabol on every Sunday. Hallabol expresses deep sorrow on the demise of Dr. Bablu Shukladash and also expresses condolences to his friends and family. Bureau Report, Hallabol. Soon after the end of Durga Puja festival, incident of accident reported from Teliamura. Injured identified as Karna Jamatia. Young man left critical after he was hit by a bolero car in Teliamura. The injured man has been identified as Karna Jamatia of Hadra, was going to Manik Bazar in his bike when the bolero car bearing number TR04B1654 had hit him. Presently, he is admitted in Teliamura Hospital where he is undergoing treatment, but the doctors say that his condition is critical. On the other side, local people have caught the car and snatched the key. Here, it's worth mentioning that there has been a drastic increase of accident cases in the state. Bureau Report, Hallabol. Immersion of Goddess Durga continues at Dashami Ghat. Huge gathering could be seen centering the Visarjan of Devi Durga. Although Dashami or immersion of Durga idol started yesterday and many clubs and household organizers performed the ritual yesterday, twisted too, many clubs are heading towards Dashami Ghat for Durga Visarjan. Crowd thronged to Agartala Dashami Ghat to see idol immersion. As Tripura bids farewell to Goddess Durga, people gathered along the streets of Dashami Ghat to witness Devi Durga's Visarjan. Although the government declared not to organize carnival this year due to COVID-19, but gathering could be seen along the streets to view the procession of Goddess Durga along with her children. The administration took up a tiresome yet essential process of maintaining peace and order. In the wake of COVID-19, though people could be seen wearing masks, but no social distancing could be seen maintained, which may prove fatal in future. Bureau Report, Hallabol. Ahead of the forthcoming Bihar elections, Congress launches Pick Up Bihar social media campaign. Though the platform the common people of Bihar took a toll on the Nitish-led government, said it did nothing for the development of Bihar and its people. Centering the upcoming Bihar elections, All India Congress launched social media campaign Speak Up Bihar. The people of Bihar poured out a bunch of accusations on the NDA government, said it did nothing for them. बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। बिहार झूठ और जुमलों को नहीं सहेगा। अन्याय के खिलाफ अब बिहार बोलेगा। जुड़िए स्पीक अप बिहार अभियान से।
The Dalit people alleged Jaidu Bhajpa government has deceived them with false promises. Although the NDA government came into power promising a lot to the Dalit community but did not give anything to the people. कोई नीतीश कुमार ने विकास किया, कहा दलित को जमीन देंगे, फलना देंगे, चिल्ला देंगे, कुछ नहीं दिया है, देता है कह करके जीत के चला गया है, और कोई कुछ गरीब को नहीं देखता है। सड़क कुछ नहीं, चलिए ना सड़क देख लीजिए न जाकर के क्या है, दलित को कैसे गुजर करता है, कैसे रहता है। Common people alleged that the Nitish Kumar government in Bihar did nothing in past 15 years. It did not give any employment opportunities to the work-class people, also did nothing to save the poor. स्थिति खराब है और क्या। सरकार कैसे काम कर रही है यहाँ पे? कोई काम नहीं, बेरोजगार को लिए रोजगार कहाँ दे रहा है, हम लोग तो ऐसे मर रहे हैं। लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आकर? हाँ, यही प्रॉब्लम है कि अपना रहने के लिए भी सुविधा नहीं है, हर चीज के लिए सुविधा नहीं है। बस ये बताइए, नीतीश सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया राजगीर में? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। नीतीश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक नारा दे रहे तरक्की दिखती है। कोई तरक्की नहीं है, तरक्की नीतीश सरकार कुछ नहीं किया। No work has been done in past 15 years. No development has been done in Bihar. After coming into power, the representatives did not visit the villages for second time, alleged the people of Bihar. 15 सालों में कोई कामें नहीं हुए हैं, जो जहाँ हैं वहीं पड़े हुए हैं, और कोई विकास नहीं, कोई सड़क, कोई कुछ नहीं। देखिए रोड कितना बड़ा टूटे हुए हैं, कहाँ यहाँ और गांव हैं, बहुत सारी बात है। आज तक जो जीत के गए हैं मगर कोई गांव घूम के नहीं आए हैं। बदलाव करेंगे। The common people of Bihar showed severe angst against the NDA government, alleged that it pushed the people backward rather than developing them forward. Bureau Report, Hallabol. Indian government extends guidelines for reopening. This has been a measure to open the economy that was hit by COVID-19 imposed lockdown. The Indian government on Tuesday extended the guidelines for reopening which were issued last month till November 30, a move seen as a measure to open the economy that was hit by COVID-19 imposed lockdown earlier this year. Ministry of Home Affairs MHA issued an order today to extend the guidelines reopening issued on 30/9/2020 to remain in force up to 30/11/2020. Read a statement issued by the Indian government. Since the issuance of the first order on lockdown measures by MHA on March 24, 2020, almost all activities have been gradually opened up in areas outside the containment zones. While most of the activities have been permitted, some activities involving large number of people have been allowed with some restrictions and subject to SOPs being followed regarding health and safety precautions. This includes metro rail, shopping malls, hotels, restaurants and hospitality services, religious places, yoga and training institutes, gymnasiums, cinemas, entertainment park, etc. In respect of certain activities having relatively higher degree of risk of COVID infection, state and union territory governments have been permitted to take decisions for their reopening based on assessment of situation and subject to SOPs. Whereas lockdown shall continue to be implemented strictly in the containment zones till 30th of November 2020. The Indian government on Tuesday said new confirmed cases in the last 24 hours have fallen below 36,500 for the first time in 3 months. The new cases were 34,884 on 18th of July 2020. With a higher number of COVID patients recovering every day and the sustained fall in the mortality rate, India's steady trend of registering dipping active cases continues. Bureau Report, Hallabol. AICC spokesperson Randeep Singh Surjewala took a toll on the Manohar Lal Khattar-led government in Haryana on the issue of Nikita Tomar murder case. Also slammed Prime Minister Narendra Modi, said only speeches and slogans won't help, you need to implement them.
21-year-old woman was murdered in broad daylight outside her college in Ballabgarh in Haryana's Faridabad district on Monday. The incident took place during a failed abduction attempt that was recorded on camera. The woman, identified as Nikita Tomar, had come out of her college after appearing for an exam when the incident took place. The accused, who arrived at the spot in a vehicle, tried to pull the woman inside a possible bid to abduct her, but she resisted, after which one of the accused shot her. The brutal murder was caught on camera, but both the men allegedly involved in murder have been arrested and the main accused has been identified as Tausif. Police confirmed. The other accused has been identified as Rehan, a resident of Na in Haryana. The incident has shook the state of Haryana as well as the whole country. One after one incident of crime against women are reported almost every day from nooks and corners of the city. Question arises, are women really safe in their own homeland? In this issue, AICC spokesperson Randeep Singh Surjewala slammed Narendra Modi-led government in the centre and also raised strong remarks on Chief Minister of Haryana, Manohar Lal Khattar. हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस ने एक बार फिर हरियाणा की आत्मा और देश की आत्मा को दहला दिया है। बीकॉम का पेपर देकर आई निकिता हरियाणा की बेटी को जिस प्रकार से गुंडों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, बाकायदा वीडियो बना, परंतु पुलिस नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। कहां गुम है खट्टर सरकार? बेटियों के साथ इस प्रकार से हो रहा अनाचार और हत्या। और केवल यही नहीं, होमगार्ड के जवान जुगल किशोर को इसी प्रकार से गोली मार दी जाती है, एक और दुकानदार को गोली मार दी जाती है। क्या बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी खट्टर साहब? हरियाणा में 2 साल में 45% महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा गैंग रेप में देश में 1 नंबर पर है, केवल 2.5 करोड़ की आबादी का प्रांत। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी जजप्पा और भाजपा सरकार को। क्या बेटियां इस प्रकार से महफूज होंगी? क्या बेटियां अब बीकॉम का पेपर देकर अपने घर नहीं जा सकती? इस प्रकार से दिन दहाड़े हत्याएं होंगी? खट्टर साहब, चेतिए, जागिए, बदमाशों को पकड़कर सीमित समय में सजा दीजिए, नहीं तो आए दिन खबर अखबार की सुर्खियां, टेलीविजन की सुर्खियां केवल और केवल बेटियों पर होते हमले से भरी पड़ी हैं। ऐसी सरकार को एक दिन भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। काश खट्टर साहब आपके बच्चे होते तो आप जानते कि इस प्रकार की वारदात बच्चे के साथ हो जाए, बेटी की दिन दहाड़े हत्या हो जाए, इस प्रकार से दुकानें लूट ली जाएं, तो फिर परिवार के मन पर क्या बीतती है। अब भी उठिए, जाइए निकिता के घर, मरहम लगाइए और 30 दिन के अंदर दोषियों को सजा दिलाइए। हरियाणा का रोम रोम खट्टर साहब ये चीख कर आपसे कहता है। Surjewala said when the whole video could have been captured, where was the police administration? He raised question on the role of Khattar government and asked, what is the government doing regarding safety of women and against escalating crime rate against women? He cited rise of crime against women by 45% in past 2 years in Haryana. Also that Haryana ranks the first position in the country for incidents of gang rape. Surjewala took a dig on the Chief Minister ML Khattar and the BJP government in the centre, said they should be ashamed of themselves. He asked Khattar government to rise up and see that the accused get punishment in right time. He added, otherwise this government has no right to sit on the apex position. Bureau Report, Hallabol. Pollution Control Board of Tripura collected water samples from the major rivers of the state to check the amount of pollution centering the immersion of idols after the grand festival. Following the immersion of idols at various rivers after 4 days long festival, Pollution Control Board of Tripura detailed the amount of water pollution on Tuesday. Honorable National Green Tribunal এবং Central Pollution Control Board একটা গাইডলাইন আছে যে যেগুলো ফেস্টিভ সিজন, ধরুন গণেশ পূজা, দুর্গা পূজা,
তারপরে ইত্যাদি যে ফেস্টিভ্যালগুলি আছে এগুলির আগে এবং ডিউরিং এবং পোস্ট এগুলির মধ্যে যেখানে ভাসান হয় মূর্তিগুলি ওই ভাসানের জল পরীক্ষার একটা গাইডলাইন আছে। সো সেই মোতাবেক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আমরা আগরতলার হাওড়া নদী, উদয়পুরের গোমতী নদী, তারপর আমবাসার ধলাই নদী আর কৈলাসহরের কুমারঘাট নদী, এই 4টা নদীতে আমরা দশমীর 7 দিন আগে এবং দশমীর দিন এবং দশমীর 7 দিন পরে আমরা নদীর যে জল সেই জলের স্যাম্পল কালেকশন আমরা করেছি এবং সেগুলি ল্যাবরেটরিতে অ্যানালাইসিস হবে। সেই অ্যানালাইসিস রিপোর্টের বেসিসে সেই রিপোর্ট আমরা সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে পাঠাবো এবং যদি রিপোর্টে এরকম কিছু দেখা যায় সেই মোতাবেক আমরা সংশ্লিষ্ট যে দপ্তর আছে বা সংস্থা আছে তাদেরকে আমরা মানে কি করণীয় কি ব্যাপার সেই রিকমেন্ডেশন সহ সেটা আমরা তাদেরকে পাঠাবো। Shri Vishnu Kumar, scientist of Pollution Control Board Tripura, said like every year, this year too, they collected sample of water from the major rivers where Visarjan of idols takes place after the grand festival. They collected the water sample once prior puja and once at the day of Dashami. Also, they will collect it after next 7 days. This is done in order to check the amount of pollution in the water as the idols contain various paints and other hazardous stuffs that could be harmful for the people. The Pollution Control Board of Tripura also guided the people of the state on noise pollution and bursting of crackers in the time of Diwali and Lakshmi Puja as it causes air pollution. The officials of Pollution Control Board maintain a strict eye upon these two, especially in the time of festival. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, keep watching Hallabol.